Good evening and welcome. You're watching Newsbreak with me, Sanket Upadhyay. There's a sex scandal which has rocked the Haryana government. It's a political war also over sexual harassment charge against a Khattar minister who's a sports star himself. The sports minister was accused. He stepped aside but has not resigned just yet. Let's quickly take a look at what the allegations are against him. Ex-hockey player, he's also popularly known as Flicker Singh. He was the captain of the hockey team between 2009 to 2010. This is, we're talking about Sandeep Singh, who has been accused of sexual harassment. He was paralyzed from waist down after he was accidentally shot, regained a spot in the Indian team after physical rehabilitation. A movie, the biopic Surma, was made after Sandeep's life in 2018. He also featured as a judge on popular reality show Roadies. Then he joined the BJP in 2019, won from the Pehowa Assembly constituency in Haryana, and was made Haryana Sports Minister and MOS of Printing and Stationery. As of this moment, he has stepped aside as the Sports Minister, however, continues to remain a minister. So questions are being raised. Now, Sandeep's resignation paradox. What exactly is this? And that is the devil in the detail that we are continuously talking about. He says, I'm handing over the responsibility of the sports department to the chief minister. He says, I'm handing over the responsibility, but he still continues to enjoy the perks and continues to be a minister in the Haryana government. That still continues. Independent in charge of one more portfolio, which is MOS Printing and Stationery. So technically, he is still a minister. He has not really resigned from ministership. He has just stepped aside the sports ministry, from the sports ministry, and handed that charge over to the chief minister. He still continues to remain a minister in the Haryana government. Now, let's first quickly tell you what exactly, as far as Haryana is concerned, the various sexual harassment cases in the state of Haryana. This very year, June 2022, Indian cyclist accused the coach of sexual harassment in Slovenia. July 2021, 7 sports persons were accused. They accused athletics coach of sexual harassment. In January 2020, a coach was booked for molesting a female cricketer. In 2015, an athlete died by suicide after being allegedly harassed by senior athletes. In 2014, gymnasts accused coach, senior gymnast of sexual harassment. And in 2010, women hockey team collectively complained about coach sexually harassing them. Now, what the sports minister has actually said, let's give out his version also, and then tell you the allegation that has been made by the victim. So the sports minister, former sports minister, says the coach has falsely accused me. That is his defense. He says, I want coach's allegations to be probed. That whatever she is saying, that must also be probed. Sports portfolio will be with CM till such time that the probe is complete. But, as we said again, he continues to remain influential. He continues to remain a minister. What exactly are the coach's allegations? The female coach, who's going to join us in just a short moment to give her side of the story. She says, for now, I'm fighting this alone. Many more people assaulted but scared to speak up. Once sports minister is arrested, more people will speak out. She then says, as long as sports minister is in power, there won't be a fair probe. The sports minister must resign and be punished for his actions. I will fight for justice till my last breath. So there is a political allegation also that this is all politically motivated, but we also made you see this. You also saw what the victim in this case is saying. In just a short moment, we'll be joined in by the victim also. I would like to introduce our guests first. DP Kaushik is the spokesperson of BJP Haryana. Swati Malik, spokesperson of the Congress Party. Tahira Hassan, author as well as activist. Thank you very much for joining us. Mr. Kaushik, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं. इतना बड़ा आरोप लग गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर लगा है, और अभी उन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स मंत्रालय का भार मुख्यमंत्री को सुपुर्द कर दिया है, उनको दे दिया है. लेकिन मंत्री अभी भी बने हुए हैं. ऐसे में एक सवाल पूछना एकदम लाजमी है
कि ये जांच जो है वो निष्पक्ष कैसे होगी? वो तो मंत्री तो अभी भी हैं। देखिए संकेत, ऑनेस्टली तो ये अच्छी बात है, मंत्री जी ने खुद अपना हैंडिंग ओवर माननीय मुख्यमंत्री को दे दिया, ये विदाउट किसी की मांग किए हुई है। तो ये तो अपना आप में खुद में ये लगता है कि जांच एक बिल्कुल अच्छी एंड फेयर जांच होने वाली है और वो की जाएगी। मैं दूसरी बात आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि फाल चलेगी इतनी, ये देखिए इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हमने तुरंत उसी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हायर वो कर ली, जो भी चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले के अंदर। और वो जांच मुझे लगता है बहुत अच्छी एक फेयर एंड नीट एंड फेयर जांच होगी। ये कौन तय करेगा वालों को या कौशिक जी, ये कौन तय करेगा? देखिए अब आप देखिए, अगर इस तरीके के आरोप किसी और पार्टी के किसी मंत्री पर लगते तो क्या आप ही की मांग नहीं होती कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? संकेत, एक चीज आपको बताऊंगा, पॉलिटिकल एलिगेशन मुझे लगता है कि हर सरकारों में लगते रहते हैं, लगे भी हैं और उनको प्रूव भी किया जाता है। प्रूव होने में बहुत टाइम लगता है। मुझे लगा एटलीस्ट फिर भी हम लोगों की जांच कहीं ना कहीं पे हमें विश्वास करना पड़ता है। मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहा था, विपक्ष को भी कहा था और पीड़िता को भी कहा था और सबको यही कहा था कि जांच आपको इस पर भरोसा करना पड़ेगा। आपको अगर फिर भी लगता है कि जांच गलत दिशा में जा रही है तो हम दूसरी जांच, जो विपक्ष चाहेगा वो जांच हम कराने के लिए तैयार है। आप मुझे बताइए कि कई बार ऐसा होता है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, एविडेंस को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश, ये सारी चीजें भी होती हैं। ऐसे में अगर कोई मंत्री बना रहेगा तो क्या ये आरोप नहीं लगेंगे? देखिए संकेत, अगर जिस सरकार को करना होगा ना वो मंत्री नहीं भी होगा तब भी करेगी। अगर मान लो अब आप ये रिजाइन दे भी देते हैं तो सरकार के मंत्री हैं, सरकार के एक्स मिनिस्टर हैं, सरकार में हमारी सरकार के सदस्य भी हैं, हमें जांच को इंक्लूड करना होगा तो भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ये क्या बात राजनीति नहीं करती। ये तो आपका ये कहना है कि वो कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब इस हिसाब से तो आपको कभी भी किसी का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। नहीं संकेत, मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार कर सकती है। मैं अपनी सरकार की बात, आपने उठाया 2010 का मामला भी, 2014 का मामला। स्वाति मलिक, स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, मिस मलिक, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? प्रवक्ता रहा हूं मैं तब भी, मुझे भी वहां भी चीजों को पता है, पर मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना। स्वाति मलिक, how would you respond? No, it's not about politics. It's a simple case of an allegation. I will not put this past everyone that there could be a possibility that a complaint can be politically motivated, but an investigation has to happen. And are we going to side with the alleged perpetrator or the victim? So, Sanket, we should not side. First of all, we should not side for either of them. Let's put it that way. But what do we have to do here? We have to build trust in the investigation that the BJP is saying that will be fair. If it is a fair investigation, then we don't need to side for either of them, right? But what is going to be a fair investigation? What is the SIT they've established? There are only police officers there. How are they going to build up the trust deficit, which is already between the government and the not only the opposition, about the people of the country? There is so much trust deficit today, Sanket. The only way to cut short this deficit and to make up for this deficit is by appointing an SIT which at least looks fair on the face of it to start with. Today, when I was reading up about who all are the part of this SIT, there is one DSP and 2 inspectors. And then they report to an SSP and the other the 2 SPs that they report to. Now, when it's within the police force, how are we calling it an SIT, or how are we sure it's going to be fair? What the BJP should have done, what they should have done is to appoint this SIT under a sitting judge or a retired judge. You have to please make it fair, and justice, Sanket, should not only be done, it should also seen to be done, right? So it has to be visible. We have to all be given confidence that yes, this investigation will be fair. Yes, there are members in this SIT who are from various, not just judiciary. There should be police. There should be some sort of activist involved there. People from different spheres of life who will come together and find out whether these allegations which are being made are true or false. That is what the BJP should have done. ओके, ताहिरा हसन, इससे पहले एक सेकंड कौशिक जी आप जवाब दें, जरा ताहिरा जी से भी जान लें। एक सेकंड कौशिक, एक सेकंड ताहिरा जी, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? डू यू फील दैट, आई मीन there is a history also, and why only sports? Women face sexual harassment in workplaces. The point is, here is a person, now as I said again, if this is
false allegation, I guess a detailed probe will bring that aspect also to light. But for a minister to continue in his capacity of a minister and just step aside as the sports minister, how does this really work? And who will it benefit? Okay, first thing I want to say, that whenever the women complain, they come out and take head on to the powerful men, the character assassination takes place, you know. They are bold enough, she is bold enough to take head on such a powerful man. Investigation. I think one of the reasons why, Ms. Tahira, one of the reasons why this allegation is being leveled, because, she was seen leveling these allegations from near or with support of, a political party. At least that's the allegation that we have heard from members in the Haryana government. That these allegations were leveled. I don't know which political party, because INLD. That's the Kaushik ji, let me get a response from Kaushik ji. I know. बताएं. देखिए, मुझे बोलना संकेत. हाँ, आपको लगता है INLD इसके पीछे है, क्योंकि ये आरोप हरियाणा में लगा रहा है, बीजेपी लगा रही है. देखिए सर, मैं इसको पॉलिटिकल तो करना ही नहीं चाह रहा. मेरी कांग्रेस प्रवक्ता जो साथी कह रही थी कि 2 DSP 1 SP, ये नहीं देखिए, ममता जी IG हैं जो वो इन्वेस्टिगेट खुद कर रही है. दूसरी बात, मुकदमा चंडीगढ़ पुलिस के अंडर हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस भी इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ऐसा नहीं कि खाली हरियाणा पुलिस कर रही है. दूसरी बात, जो अक्यूज जो विक्टिम है वो जाके INLD के ऑफिस में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो वो कहीं न कहीं एक लोगों के दिमाग में जाता है कि वो वहीं पे क्यों गई. उसको करना होता तो सीधा महिला आयोग में जाती. So that's the allegation. That is what the BJP is saying. Tahira Hassan. Oh, okay, one moment. Tahira Hassan's response. As long as she is speaking up, if she is going and using the opposition's platform, does that diminish the importance of her complaint, Tahira Hassan? Not at all. If the people she needs someone to stand with her, this woman, she's taking head on to the powerful man. So I don't know whether political parties, some activists must come forward and help her, that she's saying she's fighting alone. I feel bad that activists must come forward, because after Justice Verma committee was constituted after Nirbhaya, the gist of the committee is the state and institution must stand with the victim, and this man, Sandeep Singh, has no right to remain such a responsible post. He will influence the case, as well as he will have, again, the harassment of this victim will take place. So I think he must step down and the fair investigation must take place. So what's the problem in it? I don't know. What is the problem? The BJP must take a step. बताइए कौशिक जी, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं वो मंत्री, आप मुझे बताइए कि वो क्यों अभी भी MOS प्रिंटिंग और स्टेशनरी हैं? क्यों? मैं एक चीज बताऊंगा, पॉलिटिकल एलिगेशन हमेशा ही मैंने देखा है, पिछले 30-35 साल से राजनीति में भी कर रहा हूँ, लगते रहते हैं. अब जब तक किसी को परी तो कांग्रेस का हमारा विपक्षी साथी भी कहते हैं. कौशिक जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एलिगेशन लगते रहते हैं, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन. आप आरोप देखिए किस नेचर का लगा है. SIT एजेंसी. कौशिक जी, आपका ये कहना है कि आरोप लगते रहते हैं, दिस इज अ वेरी कैजुअल अप्रोच. He tried to rape me. I mean, do you think the women don't have any dignity? ये तो कौशिक जी, आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी कि आरोप लगते रहते हैं. ये तो ऐसे लग रहा है आप बड़े हल्के में ले रहे हैं. स्वाति मलिक, मैं इन दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या देश के कानून से किसी को भरोसा नहीं है, या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भरोसा नहीं है? This is exactly the trust deficit, or how do we have faith in them? Forget. I don't want to politicize it. I don't want to make it about Congress, BJP, or RLD, or no. I want to just ask as a citizen of this country, that how do we trust a government which says, or the spokesperson who comes on a national television and says कि ऐसे तो आरोप लगते रहते हैं, पॉलिटिकल लगते रहते हैं. मैं बताऊंगा ना. Of course, लेकिन एक मिनट मुझे कौशिक जी बोलने दीजिए. आपके मिनिस्टर का है, where is the women welfare minister, where is Miss Smriti Irani, who's against Attorney कांग्रेस के where is the NCW किस मंत्री को आरोप नहीं लगे? बताइए, मैं क्या नाम बता दूं? Surprised that NCW has not said a word on Sandeep Singh. Why? Where are they sitting quietly today? Where is Smriti Irani sitting quietly today? Where do the women? No, NCW must definitely speak up. And
so should the minister. कांग्रेस का इतिहास बताओ तो Yeah. कितने मंत्रियों पर आरोप लगे, He has to क्या आप लोगों ने condemn अनुमान the दिया? allegations. आप मान लो राहुल गांधी पर आरोप लगे, सोनिया गांधी पर आरोप लगे, आप क्या Whatever, करें? however strong आपने the कहा other कि अभी side तो may पूरा be. होने दीजिए। नहीं अरे कौशिक भाई, जी, ये कौशिक जी, एक तो सेकेंड, यहाँ पर अगर आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि सर, स्टेट की जो विमेन्स कमीशन है, सेंट्रल विमेन कमीशन है, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, आपको एक स्वर में ये बात बोलनी चाहिए कि इस्तीफा दीजिए, जांच हो जाने चाहिए, दीजिए। अगर जांच गलत निकलेगी तो फिर आप उस पर जांच कीजिएगा। जैसे कि मंत्री कह रहा है कि ये जो जांच लगा रहे हैं उस पर भी जांच हो, सब कर लीजिए, लेकिन मंत्री पद से तो हटिए। बिकॉज इफ यू सर, मैं भी कंटिन्यू तो टू विश्वास स्टे इन दिला दैट रहा पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, there is very मैं little भी तो विश्वास chance दिला of रहा any हूं। justice आप being एक- delivered एक- to the victim. SIT एजेंसी के द्वारा जांच की जाए। Mir Ranjan Negi ji is also with us, करने दीजिए। former उसके hockey बाद coach. Mr. अगर Negi, कोई संतुष्ट नहीं, Mr. हम तो Negi, करवा लेंगे जांच। how would you respond? The Haryana sports minister who has stepped aside, but he continues to enjoy all the perks and benefits and, I assume the power also of being a minister. Do you think that a fair probe can be conducted? First of all, I will say that Sandeep Singh I know for a very long time. Yeah. I was his coach and I have seen his entire journey. And at no point I ever thought, or you can imagine that something like this can happen. I think as a player, he has been outstanding. As a politician also, when he joined, he was doing great. And the allegations which has been leveled upon him needs to be completely investigated properly. And once the SIT comes out with the result, then only we can say anything. I'm not a politician. I'm a sportsman. And I'm not speaking on behalf of any party. So please understand that there could be anything, there cannot be anything, but at this stage, I don't think that he has done anything wrong. I don't know. But the point is, Mr. Negi, we have to wait for an independent probe. If you are saying that you have been a judge, you have seen him, you have trained him, and he does not look the type who would do this, he never did this, you have no reason to believe that he could be responsible for doing something like this. But the point is, an allegation exists. Now, I say this again and again, it is quite possible, and we'll only know post an investigation whether the allegation itself is correct or not. But pending the investigation, do you think it makes sense that he continues to hold on to power? Pankit, I cannot comment on that because that is a very collective decision of all the people who are there in power. And all I can say right now is that the proper investigation needs to be done. And if anything else is found out, then he should be punished to the maximum. Absolutely. But at this stage, if you feel, as a parent, his parents, his entire family must be under a great trauma. And he has been our national hero. He has represented India and he has been ambassador of the country in a way. We all, when we have played for India, we reached a level. And allegations is something different. And whatever charges has been leveled against him, if they are proved, then he is a common citizen and he needs to be punished. That is simple as that. I am having my own... Your response, Swati. Sanket, it's really, it's really difficult here, sitting here and being a spokesperson for a party, because here what I also feel very strongly is as a woman of this country, right? Now, what is being said, he doesn't look like it. These are the kind of remarks where the girl who has made this allegation, the girl who has come, I completely agree with Taira ji, she has already shown her strength by taking onto the system. Now, whether it is motivated, not motivated, all those things will, even if it is motivated, she is going to be the bigger sufferer, because when it is investigated and it's found out that it was motivated, she will suffer, right? And if it is not motivated, she has already suffered and she will continue to suffer because of character assassination that happened for her.
It is really, Okay. really tragic and it is sad. But what we need here today is for the government to actually give confidence. All right, I've run women out to of come up time. and speak. Thank you very much, DP Kaushik, Swati Malik, Tahira Hassan, as well as Mr. Negi for joining us. Thank you. और इस वक्त हमारे साथ वो कोच जुड़ गई हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं संदीप सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं और स्पोर्ट्स मंत्रालय से ज़रूर हट गए हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री को सुपुर्द कर दिया है, लेकिन वो मंत्री अभी भी हैं। आप किस तरीके से जवाब देंगे? सर, मैं चाहती हूँ सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, उसमें वो शुरू होने से पहले, उस पर कार्रवाई करने से पहले ये सबसे पहले अपना इस्तीफा दें और ये इस्तीफा जल्दी से जल्दी दें, क्योंकि इससे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है उसमें काफी दिक्कतें डेफिनेटली ये करवाएंगे और ये मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जी, आप हमें बताना चाहेंगी कि ये हादसा क्या था और ये हादसा कब हुआ था और आप इसको लेकर के अभी पब्लिक क्यों आई हैं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक आरोप लग रहा है कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जी सर, ये राजनीतिक मुद्दा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इनकी गंदी और घिनौनी हरकतें हैं वो दुनिया के सामने ना आए। और ये एंगल जो इन्होंने एक्चुअल में, जो मेरे को फरवरी से अभी तक सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, ऑफिशियली, बीइंग ए एथलीट, इन्होंने जितना मुझे टॉर्चर कर रखा है सर, तो ये उन सब चीजों को छिपाने के लिए ये चाहते हैं कि ये जिस कुर्सी पे, जिस पद पे बैठ के जिसका आज तक ये दुरुपयोग करते आए हैं, खिलाड़ियों के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट, चाहे जो भी फैसिलिटीज हैं, कुछ भी है, ये चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार में ये बैठ के इतनी, मतलब एक पावर के सिस्टम में ये बैठे हुए हैं, तो ये उस पावर को मतलब मिसयूज करने के लिए लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। ये कि जो मेन एक्चुअल जो इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो इनकी हरकतें हैं उससे नजर हटे और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा दे दो ताकि तुम उसके आड़ में बच सको। लेकिन सर ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद चीजें हैं, उसको सिर्फ बकवास करनी आ रही है। ये फरवरी से और ये अभी तक इन्होंने हर वो कोशिश की कि जैसे तैसे ये मेरे साथ फिजिकल बनाने में ये मतलब ये जो चाहते हैं ये वो पूरा हो सके। लेकिन जब हर तरीके से ही मैंने स्टैंड लिया, इन्हें अवॉइड किया, जितना हो सकता था उतना मैंने चीजों को पहले कोशिश किया। अपने एक एथलीट रही हूँ, वो भी सर एक 400 मीटर की, तो जो पेशेंस लेवल है वो इतना ज्यादा भर भर के रखा हुआ था कि इतने महीनों से मैंने जितना हुआ कोशिश की, बट ये लास्ट में आके सर मेरे को इस पे आवाज उठानी पड़ी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी, मेरी हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपके स्टेट की बेटी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, एक बहुत नॉर्मल सी लड़की हूँ मैं, एक बहुत सिंपल सा मेरा परिवार है और मैंने अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे उनसे पूरी उम्मीदें हैं। पूरा इंसाफ के लिए मैं उनसे चाहती हूँ कि वो इस जानवर को, ये जहाँ पे बैठा है, इससे तुरंत इससे इस्तीफा दिलाएं, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और पूरी मतलब अच्छे से निष्पक्ष जांच करा के वो सच्चाई सबके साथ बाहर लेके आए। रही बात यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, और मैं उनसे भी यही गुहार करती हूँ कि सर इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं इसके इन बर्ताव की वजह से मैं मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ कि मेरा एक बेसिक नॉर्मल रूटीन खत्म हो चुका है। तो मेरी नरेंद्र मोदी जी से और मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि मैं अपनी सरकार पे, अपने देश के कानून पे, आप पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ, तो प्लीज मेरा भरोसा टूटने मत दीजिए और इस इंसान को तुरंत इस्तीफा दिला के इसे जेल में डालें। आप दोहराना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जो आपने आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या थे, मंत्री क्या कहते थे? जी सर, ये इन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के थ्रू कांटेक्ट किया और ये मुझे चाहते थे हमेशा कि मैं इनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में रहूं, शादी भी ना करूं, और इन्होंने मुझे हमेशा यही बात बोलते थे कि इन्हें मैं अच्छी लगती हूं, मैं काफी पर्सनैलिटी हूं, मेरी अच्छी हाइट है, मेरा अच्छा फिगर है। इन्होंने हमेशा वही एक ही पॉइंट पे आके कोशिश की है कि वो मेरे साथ जैसे तैसे फिजिकल रहें और मैं उनकी फिजिकल नीड जो भी है वो मैं पूरी करूं। और उसके लिए जब मैंने पर्सनली उनकी जो मैं हमेशा अवॉइड करके अपने लिए एक स्टैंड लिया, तो उन्हें इस हद तक प्रॉब्लम हुई कि तब तक मैं इस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय नहीं थी, सिर्फ एक
एथलीट थी यहाँ हरियाणा की, तो उन्होंने मेरा करियर डिस्टर्ब करने के लिए बार बार मेरी ट्रेनिंग में दूसरे जो इनके साथ के एम्प्लॉइज हैं, इनके अंडर में इनकी बात सुनते हैं, उनसे रोज रोज इशू कराना, हर 10 दिन में, हफ्ते में मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब करके मेरी ट्रेनिंग रुकवा देना। फिर मैं कुछ टाइम के बाद जैसे डिप्टी सीएम सर से मैंने परमिशन ली, सारा मुद्दा उनके सामने रखा, तो उन्होंने फिर मेरी यहाँ पे जो दूसरे खेल अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए, जिसमें मेरी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी, और फिर मेरी ट्रेनिंग फिर से कंटिन्यू हुई। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय बनी, तो इनका तो एक लास्ट हथकंडा बाकी था कि अब तो ये भाई एम्प्लॉय है और अब ये देखते हैं ये कैसे मेरे पास चल के नहीं आएगी। तो इन्होंने सर मेरे नौकरी के अंदर जितना हो सकता था, जैसे मेरा ये ट्रांसफर का मुद्दा बना दिया, बहुत सारी चीजें इन्होंने मतलब हर वो कोशिश की है कि ये मैं इनके पास चल के जाऊं, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती। तो सर ये बेसिकली इनको मेरे साथ फिजिकल ये रिक्वायर चाहते थे, फिजिकली चीजें चाहते थे। जिस तरीके की आप बात बता रही हैं, मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ। ये आपके करियर पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है? सर करियर तो, अब करियर से तो शायद लगता है जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, करियर तो बहुत पीछे छूट गया है। रही बात सर मेरी जो पर्सनल जो एक मेरा सिस्टम है, तो मैं मेंटली शायद इस लेवल पे आ चुकी हूँ कि आज मतलब मेरा जो आज का दिन गया है वो इतना भारी गया है, क्योंकि मुझे 2 दिन से इतनी उम्मीदें थी। आज पूरा दिन मैंने उम्मीद थी कि इस्तीफा देगा सरकार, इससे इस्तीफा लेगी, लेकिन मेंटली बहुत और स्ट्रेस चल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में अंदर दिमाग में ये विश्वास है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ और इंसाफ तो होगा। और शायद थोड़ा सच्चाई थोड़ा सा ज्यादा दुखी होती है कंपैरिजन टू, तो भी चीजें हैं, लेकिन दुखी हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो मैं जानती हूँ, मैंने मन बना लिया है कि शायद जिंदगी में किसी भी मोड़ पे मुझे कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे धमकियां आ रही हैं या जैसे मेरा करियर जा चुका है और जो मेरी मेंटली कंडीशन है। तो मैंने आज अपने जहां मेरी सबसे बड़ी जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा ग्राउंड, आज मैंने इसमें कम बैक किया है। और सर कोशिश कर सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी एक जो इन 4-5 दिन से पहले थोड़ा सा जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी वो मुझे वापस मिल सके। अभी थोड़ी देर पहले आपने इस सवाल के उत्तर में आपने ये बोला कि आपको धमकी मिल रही है या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है? कोई धमका रहा है, कोई कुछ कह रहा है? सर धमकियां आ रही हैं, पहले कल पूरा दिन पैसों से रिलेटेड ऑफर्स आए हैं, जिसमें खुद मेरे स्पोर्ट्स के लोग मुझे चीजें बोल रहे हैं कि आप 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन गायब हो जाइए, इसके लिए आपको सामने से 5 करोड़ का, 1 करोड़ का ऑफर आ रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं तो कि किसी की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पैसा नहीं खरीद सकता। अगर मुझे पैसा ही लेना होता तो जो ये मंत्री पहले दिन से चाहता था, मैं वो चीजें प्यार से, खुशी से करती ना, आज मेरी जिंदगी को इतना दांव पे लगाती। लेकिन हर कोई एक समान नहीं होता सर, तो इसलिए ये सीधी सिंपल सी बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी जहां जहां इनके चाहने वाले बहुत हैं, और मेरे बहुत सारे शायद भाई ऐसे हैं कि जो रास्ता बिल्कुल ही भटक चुके हैं, लेकिन एक टाइम पे शायद भगवान उनके अंदर कुछ ऐसा करेगा कि वो समझ पाएंगे कि वो लड़की खड़ी है, इसके अगेंस्ट खड़ी है और खुल के खड़ी है, और उसके पास कुछ तो सच्चाई होगी। तो सर ठीक है, जैसा भी बुरा टाइम है, लेकिन मेरी हिम्मत मैं खुद हूँ, मेरा परिवार है, जितने भी मेरे पूरे स्टेट में हर वो बहन है जो सब मेरे सामने मतलब मेरे लिए इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिन्होंने मेरे पे दिल से विश्वास किया है। तो सर सच दुखी तो होता है, लेकिन लास्ट में जीत तो होती है सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले में न्याय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।